बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देसी एंड इंटरनेशनल कुकिंग। So I hope everybody will be okay. Today we will make Morocco fast food special recipe. आज हम जो हैं बनाने जा रहे हैं मोरक्को की फास्ट फूड जो कि बहुत ही स्पेशल है। तो उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ। आई विल टेल यू हाउ वी विल मेक मोरक्को फास्ट फूड स्पेशल रेसिपी। सो वी नीड फॉर दिस रेसिपी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड बॉइल्ड potatoes half kg, coriander, we have garlic, we have red pepper, we have coriander, we have salt, we have red pepper, we have onion, we have carrot, we have beef, and we have mozzarella cheese। तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमारे पास आलू जो कि बॉयल किए हुए हैं हमने, हरा धनिया है, थूम है और हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा है, नमक है, यहाँ पे हमारे पास कटा हुआ प्याज है, कटी हुई लाल मिर्च है, यहाँ पे हमने ग्राइंड करके गाजर रखी हुई है, हमारे पास कीमा है हाफ kg और मोज़रेला चीज़ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, वी विल मेक टू आवर रेसिपी। So first of all we will fry the onion in pan. First of all we will put some little oil in pan. सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे पैन में। And we will put just onion to little fry। हम प्याज को हल्का फ्राई कर लेंगे। हमारा जो प्याज है हल्का ब्राउन हो चुका है। आवर ऑनियन इज लिटिल ब्राउन नाउ वी विल पुट पेपर इनसाइड। हम इसमें ऐड करेंगे एंड वी विल फ्राई लिटिल मोर। नाउ वी विल ऐड गार्लिक। अब हम इसमें थूम ऐड करेंगे। अब हमारा जो मसाला है वो ब्राउन हो चुका है। नाउ आवर मसाला इज ब्राउन, so now we will add beef inside। तो हम इसमें जो गोश्त है उसको ऐड कर लेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। तो we will cook this one at low flame, slowly। So our keema is little cooked. Now we will add salt, pepper and cumin। हमारा जो कीमा है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ा सा धनिया। एंड वी विल ऐड सम coriander also and we will carry on cooking।
सकते हैं हमारे कीमे का कलर बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। यू कैन सी व्यूअर्स our keema is very nice, looking very nice. We will add now carrot inside. अब हम इसमें गाजर ऐड कर लेंगे। We will fry little more. हम इसको और थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्च ऐड कर लें, ये ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू स्पाइसी यू कैन पुट पेपर आल्सो, ग्रीन चिली। It is optional if you want, if you don't want, okay, no problem. So viewers, our beef is ready. हमारा जो गोश्त है वो तैयार हो चुका है। Now we will close this one. हम इसको बंद कर देंगे and we will go to next step. So here we have a next step. हमारे पास इधर दूसरा स्टेप है। इसमें जो बॉयल और हमारे पास आलू हैं इनको हम मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। वी विल मैश द पोटैटोज विद स्पून। तो इस तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। Like this we will mash the potatoes. We will add also mozzarella cheese, coriander, little salt and black pepper. हम इसमें नमक, काली मिर्च, धनिया और मोज़रेला चीज़ डाल के मिक्स करेंगे। We will mix by hand as well as इसको हाथ की मदद से अच्छा मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जगह मिक्स हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पोटैटोज रेडी हैं बिल्कुल। यू कैन सी व्यूअर्स आवर पोटैटोज इज रेडी। सो नाउ वी विल पुट दिस कीमा इन द पैन। So like this we will put this beef। हम इस तरह कीमे को डाल देंगे इसके ऊपर। इसको डेकोरेट कर लेंगे। Our potatoes recipe is ready for cooking. So now we will make with spoon little design like this. It is optional. If you want you can make, if you don't want it's no problem. ये optional है, अगर आप बनाना चाहें डिज़ाइन तो बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको पका सकते हैं, कोई इशू नहीं है। So viewers, now our recipe is ready for cooking. Now we will put in oven 250 temperature 25 and 30 minutes. हम इसको 25 से 30 मिनट के लिए ओवन में पकाएंगे 250 टेम्परेचर पे। So let's go to put inside.
I hope you enjoy the video. If you enjoy, please like the video, subscribe my channel, and thank you very much for watching. I love you.